Today we have to find out or solve the determinants, like evaluate the determinants A, H, G, H, D, F, G, F and C. Evaluate the determinants. Question number 5. 5A. We have to find out the determinant of this, so that we have to expanding along the first row, expanding along the first row. We will remember the sign like a plus, minus, plus, plus, minus, plus, so that we can expanding along the first row. And how to expanding? With the first elements A, we can eliminating by neglecting the belongs to A, like a first row and first column, and the remaining element can be write down in determinant way B, F and F, C. B जो जगह अच्छी बात corresponding row corresponding column को neglecting कर दवा, remaining element को determinant way रे लिखवा 2 by 2 determinants. Similarly, minus H belongs to second column, first row, remaining element H, F, G, C. H, F, G, C. And third element like H plus G, plus G. First row, third column. So remaining element like H, B, G, F. H, B, G, F. Now, this is the 2 by 2 determinants. To now solve A into principal diagonal element ro multiplication minus off diagonal element ro multiplications. Principal diagonal element like B और C. तो जब B C को multiply करेगा minus off diagonal elements रो multiplication. B into C, B C minus F into F square. Complete. Minus H into HC minus G F plus G H into F minus G B. Now you have to solve these equations of multiplication like as A B C minus A F square minus A square C minus into minus plus HGF plus HGF minus G square B. So simplify. This is the answer of the determinants. Now you can solve the question number 5. Evaluate करेगा determinants. Sin square theta cos square theta 1, cos square theta sin square theta 1 minus 10 12 2. You can evaluate the determinant and what is the value of the determinant. You can solve this. Okay, now sin square theta plus cos square theta is 1, so that we can adding the maximum number of 0 और 1 को convert करने पे चेष्टा एलिमेंट गुड़ा को कौन करिबा मैक्सिमम 0 कन्वर्ट करबा पे चेष्टा करिबा. So the return the sin square theta cos square theta is 1. Now we can adding the column 1 can be write down in column 1 plus column 2, so that
sin square theta plus cos square theta. Similarly cos square theta plus sin square theta. Column 1 को change करछु. Column 1 equal to column 1 plus column 2. So that column 1, this is column 1 and this is column 2. We can add column 1 to changes करिया को ना column 1 plus column 2. So that sin square theta cos square theta. Cos square theta sin square theta and minus 10 plus 12. And column 2 will be same like as cos square theta sin square theta and 12. And third column will be 1 1 2. 1 1 2. So that now we have known the sin square theta cos square theta is 1. So that you can write down in 1 cos square theta 1. Cos square theta sin square theta is 1 also. Sin square theta 1. Minus 10 plus 12, that is 2. 12. Now I'm going to check out. What पहले ना 1 cos square theta 1 sin square theta 1 2 12 2. कौन कहली हमर एम होची डिटरमिनेंट मैक्सिमम एलिमेंट को 0 कन्वर्ट करबा. 0 कन्वर्ट कले कोन पाइबा ना डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करबा पे इजी होबा हम. सो दैट नाउ इट 1 अछि 1 1 2 here also 1 1 2. जदी उना डिटरमिनेंट रे एलिमेंट गुडा दीटा रो कि दीटा कॉलम समान हो जाए बा आइडेंटिकल हो जाए ताले कोन डिटरमिनेंट वैल्यू 0. The value is 0. So our determinant value is 0. Or we can solve in this way like as देखो हम कौन कलेक्ट column 1 को changes कले column 1 plus column 2. So that sin square theta plus cos square theta 1 sin square theta sin square theta 1 minus 10 plus 12 2. आपको सॉल्व कले कौन पाइला हमें कॉलम टाको ना 1 1 जब मेरे कॉलम 1 here column 1 and column 2 are identical. Or we can solve another way like as देखो कौन करी ना column 1 को changes करबी और changes ना column 1 को changes करबी column 1 plus column 2 minus column 3 जति कर देली ताले कोन जीवो सेम वैल्यू फाइंड कर केमती ना column 1 changes to column 1 plus column 2 minus column 3. So that column 1 will be or like is sin square theta plus cos square theta minus 1. कौन करी ना column 1 plus column 2 minus column 3. So that cos square theta plus cos square theta minus 1. Similarly cos square theta plus sin square theta minus 1. Again third element will be minus 10 plus 12 minus 2. And the column 2 and column 3 will be same like as cos square theta sin square theta 12 1 1 2. So that now the cos square theta plus sin square theta is 1. So that 1 minus 1 cos square theta sin square theta 1 minus 1 minus 12 plus 12 minus 12 it is 0. So that also 0 plus 12 minus 12 अछि. Now cos square theta sin square theta 12 1 1 2. Now our determinant will be 0. Third column will be 0 0 0 and second column will be cos square theta sin square theta 12 1 1 2. So हम कंडीशन पढ़ुले ना गोटे रो कि गोटे कलम रे प्रत्येक एलिमेंट जो 0 हो जाए ताले डिटरमिनेंट विल बी 0. ना बुझले नहीं नेक्स्ट देखिबा
minus 1 3 2 minus 1 3 2 1 3 2 1 3 2 minus 1 3 2 1 3 2 1 minus 3 1 minus 3 minus 1. You can evaluate the value of determinants. You can evaluate the value of determinant. What is the determinant value? So that you can simplify using the property like as rho 1 कौन करिवा ना rho 1 plus rho 2 देखिवा एटी कन्वर्ट करबी 0 ये 0 एटी 1 रखी so that rho 1 चेंजेस करबी rho 1 can be changes rho 1 plus rho 2 so that rho 1 will be 1 minus 1 0 3 plus 3 6 2 plus 2 4 and second row will be same 1 3 2 1 minus 3 minus 1 कौन बोली कटे डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करने हेले मु मैक्सिमम 0 कन्वर्ट करबी आइदर रो और कॉलम मु चूज करी कोन एक कॉलम रे ए दिटा एलिमेंट को 0 करबी लास्ट एलिमेंट को रखिबी सो दैट नाउ रो 1 चेंजेस करली रो 1 plus रो 2 minus 1 अछि रो 1 से डायरेक्ट कर देली रो 1 plus रो 2 करली minus 1 plus 1 0 3 plus 3 6 2 plus 2 4 and rho 2 and rho 3 will be same. Now similarly you can suggest rho 2 like as rho 2 changes rho 2 minus rho 3 rho 2 changes करी कौन ना rho 2 rho 3 को subtraction कर दो पहले को फर्स्ट रो सेम 0 6 4 सेकंड रो चेंजेस चला 1 minus 1 0 3 minus of minus that is 6 2 minus of minus 1 that is 3 last row will be same like a 1 minus 3 minus 1 हमरो m कोन फर्स्ट कहूची गोटे रो किबा गोटे कॉलम को मैक्सिमम 0 कन्वर्ट करबा देखो ये दिटा 0 कन्वर्ट हो गला जदि थर्ड रो एक्सपेंडिंग करबी एक्सपेंडिंग along row 3 so that expanding along column 1 for expanding along column 1 expanding along column 1 so that this is the plus minus plus minus plus minus plus minus plus plus minus plus so that expanding only along column 1 એટલે column 1 0 0 को expanding करबा दरकार नै only last element 1 plus 1 को expanding only so that the rest element will be 6 4 6 3 so that our element will be 1 into 18 minus 24 that is minus 6 and the determinant value is minus 6 कौन बोली एक्सपांडिंग along the column 1 तो column 1 ले 0 को 0 1 इधर करबा दरकार नै कि 0 अछि 0 जेकोन से एलिमेंट मल्टीप्लाई करले 0 पाइबा so last element will be 1 so that 6 4 6 3 now you can multiply principal diagonal element minus of diagonal element it is 18 minus 24 the answer will be minus 6 now can solve similarly we will solve v third I third I last ix and x now question 6 number will be given question number 5 रे जे सॉल्व करबो जदी एनी डाउट रहइबो WhatsApp रे मैसेज करबो question 6 will be given so that x equal to 1 so that x equal to 1 is the solution of
solution of determinant x plus 1 3 5 2x plus 2 5 last element will be 2 3x plus 4 2 3x plus 4 equal to given is 0 2 3x plus 4 x plus 1 3 5 4 so that x equal to 1 you can solve kariba हम देखबा कोन x equal to 1 that is the value of x is equal to 1 or solution of x is 1 if the determinant will be given x plus 1 3 5 2x plus 2 5 2 3 5 2 3 5 now हमें यूजिंग करवा डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टी कौन थोड़ी x plus 1 3 5 2x plus 2 5 2 3x plus 5 कौन कली ना रो कॉलम 1 को चेंजेस कली कॉलम 1 plus कॉलम 2 plus कॉलम 3 so that पाइबा कौन 5 plus 3 plus 1 8 plus 1 9 here also 5 plus 4 9 here also 5 plus 3 8 plus 1 x plus 4 अच्छा देखो कौन करिवा हम कॉलम 1 को चेंजेस कली काइनी चेंजेस कली पुन देखो ना देखो इडी x plus 1 plus 3 plus 5 को ऐड कर देबी कॉलम 1 plus कॉलम 2 कॉलम 3 चेंजेस कली का कॉलम 1 रे तले कौन पाइबा ना x plus 9 here also 2 plus 2 4 plus 5 x plus 9 here also 2 plus 3 5 plus 4 x plus 9 देखो समान पाइबा कि नहीं x plus 9 x plus 9 here also x plus 9 so we have to taking common नहीं जीवा then expanding करिवा along column 1 so that देखिवा ଏବେ क्वेश्चन भी गिवे ना column 1 को चेंजेस करी कौन करी ना column 1 plus column 2 plus column 3 so that our new determinant like is x plus 1 plus 3 plus 5 x plus 1 plus 3 plus 5 column 1 को चेंजेस करी column 1 plus column 2 plus column 3 so that x plus 1 plus 3 plus 5 like similarly second is 2 plus x plus 2 plus 5 last will be 2 plus 3 plus x plus 4 and the second column will be same like as 3x plus 2 3 5x plus 4 now अच्छा 5 plus 3 plus 1 9 तो x plus 9 x plus 9 x plus 9 and second column will be 3x plus 2 3 5x plus 4 now देखो कॉलम वाले कौन अछि ना x plus 9 x plus 9 x plus 9 we have to taking common in column 1 like x plus 1 column 1 रे mo x plus 9 को common नेली तने न्यू डिटरमिनेंट like is 1 1 1 3x plus 2 3 5x plus 4 taking देखो कॉलम 1 ले कौन टेकिंग कॉमन नेली ना x plus 9 प्रत्येक एलिमेंट रो कॉलम रो अछि कि नहीं हमने फर्स्ट कॉलम रे की अछि x plus 9 x plus 9 x plus 9 so that we have to taking x plus 9 and so that column 1 will be 1 1 1 and column 2 will be 3x plus 2 will be same 3x plus 2 3 and third column will be 5 5x plus
4. Now देखो कली कौन ना कलम रो 1 को रो 2 को चेंजेस करी 0 एटी कन्वर्ट करी एटी भी 0 कन्वर्ट करी हाउ टू कन्वर्ट देखो x plus 9 रहिला देखो ना रो 1 को चेंजेस करी रो 1 minus रो 2 सिमिलरली रो 2 को चेंजेस करी रो 2 minus रो 3 so that determinant will be x plus 9 अच्छा 1 minus 1 0 3 minus x minus 2 so that 1 minus x 5 minus 5 0 and second row will be row 2 minus row 3 so that 1 minus 1 0 x plus 2 minus 3 so that x minus 1 and last element is 5 minus x minus 4 so that 1 minus x and last row will be same like it 1 3 x plus 4 now we can expanding along the column 1 now expanding along column 1 in column 1 रो साइन कौन थिला ना प्लस माइनस प्लस so that 1 x plus 9 x plus 1 then 1 belongs to third row in first column so that our rest element the remaining element को I mean determinant वाले लिखवा like is 1 minus x 0 x minus 1 1 minus x now देखो कौन कले एक्सपांडिंग कले कौन x plus 9 into 1 minus x 0 x minus 1 1 minus x so that now x plus 9 देखो मल्टीप्लाई करिए कौन ना प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अछि 1 minus x 1 minus x मल्टीप्लाई कले कौन पाइबा 1 minus x रो होल स्क्वायर minus 0 into of diagonal 0 into x minus 1 will be 0 so that 1 minus x रो होल स्क्वायर equal to given as determinant रे क्वेश्चन थिला कौन equal to 0 so that x plus 9 1 minus x 1 minus x can be written so that x equal to minus 9 and x equal to 1 the question will be given so that I mean देखा कौन थिला ना so that x equal to 1 so that x equal to 1 क्वेश्चन थिला हमारो so that x equal to 1 is the solution of given determinant तो determinant थिला x टा 1 हेले determinant रे solution हबो so that here also हम सॉल्व करने पाइले कौन x equal to 1 or x equal to minus 1 so that the condition will be true